सोलापुरातील पूर्व भागात माय डिनिम या ठिकाणी होलसेल दर रिटेल मध्ये उपलब्ध। 3 जीन्स मिळवा फक्त 1200 रुपयात आणि 3 टी शर्ट मिळवा फक्त 1000 रुपयात। हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक शुभेच्छा। सोलापूरचे सुपुत्र आणि निलगार ज्ञाती संस्थेचे विद्यमान संचालक तसेच माजी जॉईंट सेक्रेटरी म्हणून उल्लेखनीय सेवा बजावलेले श्री दयानंद अय्यप्पा अल्लोळी यांचा आज वाढदिवस विशेष उत्साहात साजरा केला जात आहे। एनबीके बाळू युथ फेडरेशनचे कुशल सूत्रसंचालक आणि भारत न्यूज एक्सप्रेस 9 चे विशेष कार्यकारी संपादक म्हणून ते सातत्याने सामाजिक, सांस्कृतिक आणि पत्रकारितेच्या क्षेत्रात मोलाची भूमिका बजावत आहेत। नंदमुरी बाळकृष्ण यांच्या कार्यक्रमात सोलापुराचे अस्तित्व अधोरेखित करण्याचे आणि शहराची ओळख उंचावण्याचे काम दयानंद अल्लोळी यांनी उल्लेखनीयपणे पार पाडले आहे। त्यांच्या कार्याची राज्यभरातून प्रशंसा होत असून सोलापूरचा अभिमान वाढवणाऱ्या व्यक्तिमत्वांमध्ये त्यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते। समाजकार्य, संघटन कौशल्य आणि पत्रकारितेतील निष्ठा यामुळे दयानंद अल्लोळी यांनी स्वतःची स्वतंत्र छाप पाडली आहे। विविध सामाजिक उपक्रमातून त्यांनी युवकांपर्यंत सकारात्मक संदेश पोहोचवण्याचे काम सातत्याने सुरू ठेवले आहे। आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त भारत न्यूज एक्सप्रेस 9 परिवारासह अनेक मान्यवरांनी त्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा दिल्या आहेत। त्यांच्या आगामी वाटचालीसही उत्तम आरोग्य, समृद्धी आणि यश लाभो ही सदिच्छा। शुभेच्छुक, भारत न्यूज एक्सप्रेस 9। A group picture and then there is a Q&A from the audience and from media. जय बालया, जय बालया। इदी कदा राजसम, इदी कदा पौरुषम, पुली कड़पुना पुले पुड़तुंदी सर। हिंदू सनातन धर्मको प्रतिरूपम మీరే సార్। ఎన్బీకే బాలు యూత్ ఫెడరేషన్ సోలాపూర్ నుంచి మేము 30 సంవత్సరాలుగా సోషల్ వర్క్ పని చేస్తున్నాం సార్। మొత్తం मैं गर्व से बोलना चाहता हूँ कि मैं खुद कैंसर हॉस्पिटल या एनबीके ट्रस्ट या एज एमएलए या एज एक्टर ये अच्छा मैसेज इस फिल्म से ही नहीं, हमारे फैंस भी सब सोशल वर्क में बहुत एक्टिव रहते हैं। मेरे फैंस मैं बोलने के लिए ये बहुत गर्व फील हो रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। తెలుగు తల్లి వడిలో పుట్టిన అమృత పుష్పం ఇది। తెలుగు సినీ సృష్టిని శాసిస్తున్న నందమూరి వంశం ఇది। क्या बात है। తల్లి గర్వపడుతుంది మా బాలయ్య తన వడిలో పుట్టినందుకు। ఆకాశం అభినందిస్తుంది మా బాలయ్య తనపై ఎదిగినందుకు। సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు మా బాలయ్య అల్లరి ఆట చూసేటందుకు। చంద్రుడు తొందరపడుతుండు మా బాలయ్య పసినవ్వు నేర్చుకునేటందుకు। గోదావరి ఎదురు చూస్తున్నాయి మా బాలయ్యతో సరసాలు ఆడేటందుకు। మా అభిమానుల జీవితాన్ని అంకితం చేస్తాం మా బాలయ్య చల్లగా నూరేళ్ళు ఉండాలి।